Hello दोस्तों, welcome to GrowMed. Welcome back to another session of discussing an important PYQ for the FMG. So today's topic is the Zenker diverticulum and very important esophageal condition, and frequently questions have been asked on this in anatomy, then in surgery, in medicine, even in the pathology. Okay, so let's look at those things which are asked in the FMG. Then this one is also known as the esophageal or the pharyngeal pouch, so the other name of it. So in the question there are highly chances that instead of Zenker diverticulum there will be describing these pouches, so pharyngeal or the esophageal pouch, because to confuse the students, क्योंकि Zenker diverticulum का तो सबको पता होगा, they everyone would have been read about this, तो to confuse you all they will be giving these other names. Then it is the most common esophageal diverticula, and it is a false diverticula. False matlab ki all the four layers of the esophagus are not involved in it. That's why it is called as a false diverticula. Then location, तो location भी बहुत famous question है इसका Zenker diverticulum पर. The questions are asked कि image based question, giving this image they will ask Zenker diverticulum कहाँ से originate हो रहा है. तो it originates between the cricopharyngeus muscle and the thyropharyngeus muscles. तो ये तो muscles के नाम हो गए. Then the exact location is the Killian's dehiscence. So this one is also asked as a MCQ. And inferior constrictor is also involved. तो inferior constrictor muscles जो है, these muscles are again having two parts. तो उन दोनों के parts के बीच में crico and thyro, उसके बीच में this pouch will be formed. So pathophysiologist की ये है कि due to the dual nerve supply, तो इस muscle की dual nerve supply की वजह से there will be in coordination between the muscle which will increase the pressure of the esophagus, and this pressure will be forming an outpouching. तो muscles की जो weak point है वहाँ से this will start to form an outpouching and this will be called as a pouch. तो क्लिनिकल फीचर्स उसकी डिस्क्राइब की गई क्वेश्चन में, दे विल बी लाइक द डिस्फेजिया, halitosis and regurgitation. Then investigation of choice is the barium swallow, and for treatment we will be using the cricopharyngeal myotomy or diverticulopexy and Dolman's procedure. So this one is a PYQ. Simple one-liner was asked in the past year that Dolman's procedure is used for which of the following, and the answer was Zenker diverticulum. But now I don't think they'll be asking such easier questions. They can make the question lengthy. एंड टू मेक द क्वेश्चन लेंदी, तो ये लोग क्वेश्चन में केस बना देंगे, डिस्क्राइब करेंगे. मेल पेशेंट आफ्टर ईटिंग सम एंड सम फूड ही केम विद द कंप्लेंट्स ऑफ डिस्फेजिया, हैलिटोसिस एंड रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड. फिर यू डिड द चेस्ट एक्सरे और यू डिड द एग्जामिनेशन, एंड ऑन एग्जामिनेशन यू फाउंड सो एंड सो appearance or so and so finding, and after that you made the diagnosis of the Zenker diverticulum. Now what is the management? तो देखो फालतू में केस बढ़ा दिया ना इतना सब कुछ दे के, जस्ट टू मेक द स्टूडेंट्स कंफ्यूज और पैनिक करने के लिए कि टाइम कंज्यूमिंग भी है ना ये. देखो इतना बड़ा तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए जस्ट लुक एट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट लुक एट द लास्ट सेंटेंस कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है. एंड इफ़ एट ऑल, देखो इतना बड़ा केस उसने दे दिया, बट अगर उसने लास्ट में द डायग्नोसिस ऑफ Zenker diverticula इज मेड, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट. इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी ना आपको. यहाँ पर लास्ट लाइन में उसने खुद बता दिया कि Zenker diverticulum है, अभी वो मैनेजमेंट पूछ रहा है. तो मैनेजमेंट तो डोलमैन प्रोसीजर ऑप्शन में रहेगा, डोलमैन प्रोसीजर आपको चूज़ करना है. तो सिंपल वन लाइनर ही था ये, बट उसने उसको लेंदी बना लिया ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो इसमें और आप पैनिक करें बाद में. ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स होती है एग्जामिनर की भी, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. Okay, so the complications associated with this Zenker diverticulum are the lung abscess, which is the most common, and squamous cell carcinoma. Lung abscess इसीलिए हो जाता है क्योंकि in this pouch there is collection of the food, so this food can pass and go to the lungs, right. ऐसे में करके ट्रेकिया के थ्रू this can go to the lungs, तो lungs में जाके ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. एंड लॉन्ग स्टैंडिंग squamous cell carcinoma इसीलिए because long standing inflammation of this esophagus will increase the risk of the squamous cell carcinoma.
ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द Zenker diverticulum. दिस वन इज़ द radiographical finding seen. एज यू कैन सी हियर अ पाउच एंड तो ये बेरियम स्वैलो की इमेज है. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज़ द बेरियम स्वैलो. So that was all about the Zenker diverticulum, which you must know for the FMGE. I hope this video will help you in your last minute revisions. If you find this video useful, like the video, share it with your friends, and subscribe to GrowMed if you're new to GrowMed. You can also join me on my Telegram channel and also follow me on Instagram for more amazing videos related to the FMG. Thank you so much, guys. Bye bye.